Hello student, myself Nazneen Akhtar. Welcome to my study channel Naz Studies. Today we will go on the part 2 video on heredity and variation. Here we will study with MCQ as well as your express in one word. And from this we will complete our topic on heredity and variations. So come, let's study with me, practice with me and learn with me. Now we will come with express in one word. So the first question is external observable character of an organism is called. तो external observable character क्या है हमारा? That is your phenotype. The character that is observed जो दिख रहा है that is called as phenotypic character. तो so the answer will be phenotype. Second is the process of transmission of character from generation to generation is called. तो transmission of character को हम बोलते हैं heredity. Now the third question is the scientific name of the plant with which the Mendel worked. The scientific name पूछा है, पी प्लांट में काम किए थे and the botanical name is Pisum sativum. Now the fourth question is the gene pair signifying a trait is called, and the answer is allele. Allele is your alternative form of gene. Question number 5, the law of inheritance was postulated by, तो आंसर होगा इसका सजे मेंडल, ग्रीगस जोन मेंडल. Question number 6, when heterozygous round seeded plant is crossed with a recessive wrinkle seeded plant and round and wrinkle phenotype will appear. So round and wrinkle phenotype ये appear होंगे in the F1 in a ratio of, the answer will be 1:1. Now the question number 7. The phenotypic ratio in the F1 generation of Mendelian monohybrid cross is. So the answer will be 3:1. Monohybrid cross F2 generation का ratio तो 3:1 है. Then character that is expressed in the hybrid is called. So जो character express हुआ वो dominant है और जो नहीं express हुआ recessive है. Mendel succeeded in his experiment because he worked on the independent character. So here the independent character is studied. So he was succeeded in his experiment, independent character study. The F2 phenotypic and genotypic ratio are same. It is a case of incomplete dominance. हमने पढ़ा था मिराबिलिस फोरोजलापा प्लांट पे incomplete dominance, जहाँ हमने फेनोटाइप और जेनोटाइप वाइज 1:2:1 देखे थे. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेयर मिराबिलिस जलापा incomplete dominance. Example of polygenic inheritance is we can say human height. एक एग्जाम्पल है, तो ये हम वन वर्ड में स्किन कलर भी दे सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, mating of an organism to a double recessive in order to determine whether it is homozygous or heterozygous for a character under consideration is called. So what will be the answer? The answer will be test cross. टेस्ट क्रॉस से हमें पता चलता है कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है या होमोजाइगस कंडीशन है. नाउ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को हम म्यूटेशन कह सकते हैं. वेरिएशन इज व्हाट? इट इज़ द डिफरेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड और इंडिविजुअल ऑफ द सेम टाइप. सो यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है इसे हम म्यूटेशन कहते हैं. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन explain the expression of recessive character is. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमको जो रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्लेन करा ये हम देखते हैं F1 जनरेशन में. क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म यूज बाय मेंडल टू एक्सप्रेस द हेरेडिटी यूनिट इज कॉल्ड. तो मेंडल ने जो टर्म यूज़ किया था उसे फैक्टर भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं. Question number 16, the number of different kinds of gamete will be produced by a plant having the genotype AA, capital AA, BB, CC. So how much different type of gamete is produced here? We can say
two type of gamete produced. We will see the heterozygous condition always. Here the heterozygous condition is 1, and it can be calculated by a process of 2 to the power n, and the heterozygous is there only capital B small b. It is 1, only heterozygous is there, so we can write as a 2 to the power 1, that is equal to 2. So 2 type of gamete will be produced. Question number 17. The organism in which complete linkage is found, that is we can call as complete linkage. Question number 18. The process that break the linkage between gene of the same chromosome and bring about recombination, तो इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. Question number 19. The type of linkage is seen in male Drosophila. Sorry, here it is given about the organism, and the organism is here where complete linkage is seen, that is your male Drosophila. Here it is organism is written. Okay. The cytological event is antagonistic to linkage. लिंकेज के एंटागोनिस्टिक क्या है, तो जो इवेंट होती है उसे हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं. क्रॉसिंग ओवर से रिकम्बिनेशन होती है. में जीन आर इन ए लिंक, यहाँ पर रिकम्बिनेशन की चांसेस कम होती है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, रिकम्बिनेशन चांसेस नहीं होती है, बस इसलिए ये एंटागोनिस्टिक ऑफ लिंकेज है क्रॉसिंग ओवर. क्वेश्चन नंबर 21. द टर्म इज अप्लाइड फॉर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट between non-homologous chromosome. Translocation. Translocation is the exchange of chromosomal segment between non-homologous chromosome. So the number of linkage group of human and Drosophila is, linkage में human में हमारा जो number of link group होगा ये 24 है, and Drosophila में ये 4 है. ठीक है. लिंकेज ग्रुप ह्यूमन में आपका आ जाता है 24, 22 हो गया आपका फीमेल पेयर्स में, एंड देन एक्स एंड वाई मिला के 24 हो जाता है. 22 प्लस एक्स एंड वाई 24, और इन केस ऑफ ड्रोसोफिला इट इज़ 4. द चेकर बोर्ड यूज इन द जेनेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड, ये तो सीधा साधा पुनेट स्क्वायर. Sudden appearing of large and stable variation in organism is called mutations. जब भी the sudden word यूज हुआ है, variations are seen due to sudden appearance, इस तरह से कुछ भी सेंटेंस आया तो that is mutation. Chiasma formation occur in, तो chiasma हमारा पैचिटिन स्टेज में देखा जाता है. So this is all about the today express in one word. Student, you go through one by one every term. It is a very important, and prepare for your exam well. It is heredity and variations. So ecology. Okay. So wait for the next video. Till then, bye.